A very good afternoon to all of you. This is Dr. Ruchi Shirudkar, founder and director, Pediatrics. The topic for today's live is pediatrics and homeopathy. We'll discuss what are the rubrics, how to approach a pediatric case, and we will also discuss this time acutes in pediatric cases. This is very, very important because so many of the doctors told me, ki we are very scared to treat fever in children. How should we do? If the fever is 102, we don't know how to do. And in fact, homeopathic doctors themselves sometimes gives antibiotics to children or, steroids and a lot of inhalers and everything. So they just at times doesn't know what to do in the acute phase when the child is suffering from fever or some gastric infection or asthma or some bronchitis. So to treat a child in an acute is very, very important. It would really boost a lot of confidence in you, and it will also help you to look in a different perspective, right? So there are two types of acutes that we think of. There is an acute infection. For example, a child went out for a dinner with parents and had some ice cream and had fallen sick after that ice cream, okay? Or there can be an acute exacerbation of the chronic. For example, the child is an asthmatic patient, and because he has eaten ice cream or they have traveled somewhere or the weather change, the child is getting an acute attack of asthma. So in both the cases, how to deal with it, how to give the medicine, what is the best way you should give, how long you should wait, and is it okay to give crocin, or is it what we should do as parents, because we also have kids in our house, and what we should do with patients, right? So one basic acute in kids is not very difficult. It is easy if you learn to observe and ask. कई बार क्या होता है, when the child is coming to your clinic, the child has already taken a paracetamol and the child comes in the clinic and is playful, right? And I'm making this point because I have seen so many homeopathic doctors doing this mistake. They take playful and they're giving belladonna or lachesis. It seems as if playful has become significant to belladonna and lachesis, which is very, very wrong. There are many remedies in playful, राइट? बच्चा खेल रहा है, चलो बेलाडोना दे देते हैं या लैकेसिस दे देते हैं. ऐसा नहीं है. प्लेफुल में 28 मेडिसिन हैं. देन व्हाई आर वी गेटिंग स्टक टू बेलाडोना एंड लैकेसिस? ओके, सो always ask what is the reaction during illness. जब फीवर 101 है या फीवर 102 है, उस समय बच्चा क्या कर रहा है, उस समय खेलता है क्या या क्या. Don't and never ask a leading question. Always ask an open-ended question. And each case is different, You should learn to take case as it is and then decide. I always talk about analysis and evaluation. So always, take the case and then decide कि भाई किस rubric को या किस symptom को I wanted to put higher in my totality. I'll give you some examples. There was a child who used to come to me for recurrent throat infections and cold and cough, and every time I used to treat her with a different remedy, and she used to be fine most of the time, and after 2-3 months again the same story. So once her mother said कि I have observed one thing कि जब भी ये बीमार पड़ने वाली होती है ना, उससे पहली रात ये बड़ी रेस्टलेस रहती है. इसको ना नींद नहीं आती ठीक से और ये बड़ी रेस्टलेस रहती है. मुझे समझ आ जाता है कि नेक्स्ट डे इसको फीवर आने वाला है. So this was very, very characteristic. Any one of you wants to participate and tell me what remedy you are thinking? It would be great. It would be a two-way interaction kind of a thing. तो दिस इज अ सिम्टम शी टोल्ड मी विच इज रिकरेंटली ऑलवेज हैपनिंग कि जब भी उसको फीवर आने वाला है उससे पहली रात वो बड़ी डिस्टर्ब्ड है, नींद नहीं आ रही है, शी इज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. तो what is the rubric? Can you think about it? Anybody? Are you able to write on comments? So the rubric that I took in that case was sleeplessness,
prodrome as a. So the rubric is sleepless prodrome. Prodrome are the earlier symptoms that are coming before the illness, you know. तो अगर आप देखेंगे sleeplessness prodrome as a, there's a single drug China, and I prescribed her China 30. That acute was settled, and after that the frequency of acute has dramatically gone down, dramatically, right? तो इसलिए everything is important. अभी sleeplessness prodrome as a is a symptom in sleep. And एक और बात, though we practice by mind method and we give importance to mentals, but we should also look for PQRS symptoms, and each case is different. Why so many approaches have come that Boding Hussain said concomitant are important, Ken said mind is important, Boger gave importance to pathological symptoms and organ remedies. So now we, you know, at least हम इतना तो कर सकें कि जो हमारे स्टॉलवर्ड्स ने बताया है वो हम केस टू केस अप्लाई कर सकें, राइट? सो whatever is important, this case में I told you about sleeplessness prodrome as a and China. वैसे ही there was one more case, या 2-3 cases ऐसे आ चुके हैं जो कहते हैं कि ना सबसे पहले इसको खांसी शुरू हो जाती है, ये बच्चा है ना खांसने लगा ना मतलब इसको फीवर आने वाला है, ये खांस. सो cough prodrome as a, I think there are 6-7 remedies only. इसको खांसी शुरू हुई ना हमें पता चल जाता है कि ये बीमार पड़ने वाला है. He is going to fall sick, doctor, because इसको खांसी शुरू हो गई. तो prodrome, this is one part कि earlier symptoms बच्चे के क्या हैं, right? I don't ask. I'll tell you one again thing. I don't ask these things कि कुछ prodrome है क्या. I take the case as it is, and whatever important in that case is, then I evaluate. राइट मैंने नहीं पूछा था उस पेशेंट को कि ये सुनती नहीं है क्या, या इसका पहले क्या होता है, या सिम्टम क्या आता है. केस को एज इट इज लेना सीखिए, क्योंकि पेरेंट और बच्चा आपको नेचुरली बताएगा जो प्रोमिनेंट चीज है, राइट? सो डोंट bombard them with questions, just relax and let everything come first, and then whatever there are missing, then you can fill them, you know, you can ask them such questions. And the last part is your evaluation, which is very very important. अभी मैंने देखा कि कुछ लोग ना एक सेट ऑफ रूब्रिक्स ही लेते रहते हैं, जैसे प्लेफुल हो गया, या खेल रहा है, या खा नहीं रहा तो ईटिंग रिफ्यूज टू ईट. ऐसे नहीं करना है. 90% बच्चे नहीं खाते ड्यूरिंग फीवर. सो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज पिक्यूलियर, ट्राई टू टेक दोज सिम्टम्स हायर इन योर टोटलिटी. इज इट क्लियर? कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमनली बच्चों में हम देखते हैं कि and I will always say that read all approaches. That I read a complete book of Theory of Acutes by Vijayakar sir also. I studied Sehgal also. I would study any peculiar concomitant also, because we are not supposed to be rigid, you know. Yeah, I will follow this only and this is rubbish. Don't do that, because what is best for your patient or for your child, do that so that you get a wonderful result. So it is my duty as a physician that I should be aware of what all we can do. Okay? So I told you about sleeplessness prodrome, cough prodrome. Then बच्चा आता है and बोलता है कि अभी ये 2 दिन पहले ही मेरे पास एक बच्चा था, वो बोला जब भी सर दर्द होता है बहुत सर दुखता है. So this is a concomitant, right? So take it. Headache, fever during. But मम्मी बोले कि बच्चा बहुत डल हो जाता है, तो डलनेस फीवर ड्यूरिंग, डलनेस हीट ड्यूरिंग है हमारी रिपोर्टरी में. इसके पैर दुखते हैं या इसका. So whatever comes, प्लीज टेक. हमारी कोई फिजिकल से दुश्मनी नहीं है, right? And it will help you in your practice. It will help you to come to a significant totality, right? कि डॉक्टर साहब ये बड़ी घबरा रही है, इसको वॉमिट ना हो जाए. क्यों बेटा? मुझे वॉमिटिंग से डर लगता है. Fear vomiting off, Econite, Lachesis, I think there are 2 drugs in it. Dullness heat during, बच्चा बहुत डल हो गया है, पड़ा ही रहता है, इसको लेटे ही रहने का मन कर रहा है. बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड. बेड डिजायर वाला जो रूब्रिक है उसमें पेशेंट का मन करेगा कि मैं लेटा रहूं, बट अगर प्रोस्ट्रेशन बहुत है पेशेंट को, बच्चे को, एंड ही और शी इज इन अ स्टेट ऑफ टॉर्पर, मतलब इतनी वीकनेस हो गई है कि वो उठ ही नहीं पा रहा है और लेटा ही हुआ है, तब आप बेड डिजायर नहीं लेंगे.
एम आई क्लियर? मम्मी बोल रही है कि ये पढ़ा ही हुआ है, पर बच्चा अपनी इच्छा से नहीं पढ़ा हुआ है, वो अपनी वीकनेस की वजह से या अपनी स्टेट ऑफ टॉर्पर की वजह से वो लेटा हुआ है. Are you understanding? So when you make these rubrics, please apply a little bit of mind कि यहाँ तो इतनी weakness है कि वो उठ ही नहीं पा रहा, right? तो he is not wanting to lie on bed. He is in a state of weakness or torpor that he is not able to get up. अगर आप बच्चे से पूछें तो बच्चा कई बार बोलेगा खेलने का बहुत मन कर रहा है पर हिम्मत ही नहीं है, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, I am feeling very weak, you know. So such things you have to understand, you have to talk to the child, right? फिर ऑब्जर्वेशन तो आता ही है, बच्चा बीमार है, मम्मी को हग करा हुआ है, मम्मी ही चाहिए, clinging children in, mother child clings to, irritability fever during या heat during, या बच्चा चाहता है कि मेरे को गोदी में लेके घुमाओ या गोदी में लेके बैठो. सो ये डिफ्रेंसिएशन आप जरूर करिए कि यू नो ही जस्ट वांट्स टू बी ऑन द लैप, हेल्ड, डिजायर टू बी हेल्ड. ये चाहता है कि मैं इसको लेके घूमूं. हाँ, तो carried, desire to be carried, you know. So such rubrics you have to understand. And again I would say, if something is peculiar in physicals, please take it, you know. जब भी इसको रात को बुखार आता है, बड़ा डर डर के उठता है, यू नो, जो भी बोले कि ये बहुत जिद्दी हो गया. नॉर्मली दिस चाइल्ड इज वेरी माइल्ड, बट ड्यूरिंग फीवर ही गेट्स वेरी वेरी इरिटेबल एंड ऑब्स्टिनेट. बहुत जिद्दी हो गया है, ऐसा नहीं था पर बीमारी में बड़ी जिद कर रहा है. तो ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग, you know, I think it is only aconite, I think, in obstinate fever. So such singular rubrics and such peculiar physicals you should learn to, aconite, obstinate fever during, you should learn to pick up, study that way. तो simple बात, अभी जो भी मैंने आपको बताया उसको simplify करने के लिए बच्चा आपके क्लिनिक पे आया. Ailments from has a lot of value in acutes. You know, if you read Organon, you'll come to know that ailments from is very, very important. So ailments from can be physical or it can be mental, right? So mental क्या स्कूल में टीचर ने डांट दिया, मम्मी ने बहुत जोर से कुछ डांट दिया, कोई पनिशमेंट मिल गया, उसको कुछ चाहिए था, वो बहुत रोया, या ट्रैवल किया, बाहर कुछ खाया, you know, everything. 4 दिन पुरानी सब्जी थी, वो पड़ी थी, याद नहीं रहा, मेड ने दे दी, तो स्टेल फूड से है. यू नो, यू शुड कंसिडर, यू नो, कि क्यों बीमार पड़ गया बच्चा, क्या हुआ ऐसा बीमार पड़ने के लिए, राइट? सो एलिमेंट्स फ्रॉम हैज, वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल, गिव इंपॉर्टेंस टू एलिमेंट्स फ्रॉम इन अक्यूट्स, राइट? कि डैम्प वेदर था, कि कोल्ड ड्रिंक पी ली, कि आइसक्रीम खा ली, कि वट एवर इट इज, मेंटल्स और फिजिकल, बोथ. ओके, सो एलिमेंट्स फ्रॉम आ गया. फिर उसके बाद पूछो क्या कर रहा है बीमारी में. जब बुखार 102 रहता है या 101 रहता है तो क्या करता है. देन ट्राई पुटिंग ऑल दीज सिम्टम्स. डोंट आस्क भाई लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, जस्ट ओपन एंड कि क्या करता है, यू नो. एंड देन से कि टीवी देखता रहता है, ये इसको नींद नहीं आती, या बुखार चढ़ते ही सो जाता है. तो देयर इज अ रूब्रिक, स्लीप, फॉलिंग स्लीप, फीवर ड्यूरिंग. जो लोग बुखार में सो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बुखार आया कि इसको नींद आ जाती है, ये हमेशा सो जाता है, अरे बड़ी चिड़चिड़ करता है, हम तो घर वाले पूरे परेशान हो गए हैं, कोई ना कोई इसको लेके घूम रहा होता है. नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं करता, बैठा रहता है अकेले, कोई तंग नहीं करता है, कुछ ऐसी कोई डिमांड भी नहीं करता, कुछ नहीं बोलता है, कंप्लेन भी नहीं कर रहा होता, हम ही छू के देखते हैं तो पता चलता है बुखार आ गया. You know, you will get these different versions of patients, and then you are supposed to understand कि भाई ये बच्चा irritable है, कि बच्चा irritable है, कि dull है, कि asking nothing for में है, you know. and बच्चे से पूछो कि आप क्यों नहीं बताते हो, तो या तो बच्चा बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे को बीमार आ जाता है, मेरे को अभी थ्रोट आपको दिख रहा है कि एकदम रेड है, फॉलिकुलर टैंसिलाइटिस है, और बच्चा कंप्लेन नहीं कर रहा. पूछिए बच्चे से कि बेटा आप क्यों नहीं मम्मा को बताते हो, या व्हाई यू डोंट टेल अबाउट योर कंप्लेन्स.
देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज. मम्मा बिजी होती है ऑफिस के काम में, मम्मा डिस्टर्ब हो जाएगी मुझे लगता है, मैं रात को इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मम्मा को भी नींद की जरूरत है. सो द प्रॉब्ली द चाइल्ड इज इन cares full of others about. मतलब the child is also caring towards his mother. Second possibility, मुझे तो दुख ही नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं चला मुझे फीवर आ गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी. So the child was not experiencing any complaints. The rubric would be painlessness of complaints, usually painful. अभी follicular tonsillitis है, इतना गला लाल है, painful होना चाहिए, but बच्चा is not experiencing any pain. तीसरी पॉसिबिलिटी, मैं मम्मा को जाके डिस्टर्ब करती हूँ ना जब वो लैपटॉप पे काम करती हैं, she scolds me, so I didn't went and told her. So the child is having fear of reprimands. टॉक, पूछिए, अपने assumption मत लगाइए कि अरे बच्चे ने indifference complaint does not, indifference suffering too. No. Ask why the child has not complained. Ask whether the child is not experiencing complaint, or the child is not able to say because of fear, or the child is worried. कि अभी मेरे पास एक बच्चा आता था, उसको इसलिए नहीं बताता था क्योंकि मम्मा पापा कल स्कूल नहीं भेजेंगे, एंड उसको स्कूल जाना बड़ा पसंद था. तो मैंने बोला कि क्यों नहीं बताया आपने कि आपको बुखार है. तो मेरे को मम्मा पापा फिर बोलते हैं स्कूल मत जाओ, और मुझे स्कूल जाना तो बहुत अच्छा लगता है. तो आपको सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी क्यों जाना पसंद है. अभी मेरे पास ऐसे 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा बोला अरे कल फुटबॉल का क्लास है एंड आई रियली एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, या मजा आता है स्कूल में, फ्रेंड्स होते हैं, घर पे बोर होता है. This is one possibility. Other possibility, the other child said, फिर होमवर्क रह जाता है, फिर पेंडिंग हो जाता है, फिर मेरे को ना बहुत टेंशन आता है होमवर्क का, फिर किससे मांगू मैं, दे आर वरिड अबाउट होमवर्क, क्या मिस हो जाएगा, क्या रह जाएगा. सो द फर्स्ट चाइल्ड आई टुक अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, क्योंकि उसे तो मजे करने हैं, मस्ती करनी है. एंड द सेकेंड चाइल्ड आई टुक एंजाइटी चिल्ड्रन इन स्कूल चिल्ड्रन अबाउट देयर लेसन, बिकॉज उसको किसकी एंजाइटी थी, पढ़ाई की. टीचर जो पढ़ाई कराएगी वो मिस हो जाएगी, मेरा होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा. सो each is different, right? Today a child came and she said, I said, what happened? Throat is paining. Only the throat is paining, and she was playing, and she's always playing in my clinic. So I didn't took playful as a rubric, right? So what was peculiar in her, in that throat illness, what has changed in that illness, I will take that. Clear? यहाँ तक समझा आप लोग को? So the gist of all that I said is कि always, try to take case. किसी भी चीज को आप निग्लेक्ट मत करिए, एंड फिर डिसाइड करिए कि आपको किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है. ऑलवेज इवैल्यूएट. समटाइम्स वन, जैसे आई टोल्ड स्लीपलेसनेस कॉफ, आई गिव चाइना निग्लेक्टिंग ऑल द अदर टिमिडिटी एंड एवरीथिंग. समटाइम्स अ सिम्टम और 2 symptoms become so characteristic that you negate all the other symptoms and you say, no, I want to base my totality or my prescription on these 2 rubrics only, which is completely fine. But those 2 rubrics should stand out in your totality, right? मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कभी भी आपको क्लिनिक में आइडियल टोटालिटीज नहीं मिलती हैं, आपको मिक्स्ड पिक्चर्स मिलती हैं. आपको इट इज योर ड्यूटी एज अ फिजिशियन टू अंडरस्टैंड कि आप किसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, एंड देन अपनी रेमेडी सिलेक्ट करेंगे. लेग पेन्स फीवर ड्यूरिंग, हेडेक फीवर ड्यूरिंग, और clinging fever during, right? So such things you should understand. It's not very difficult, it's easy. And still if you fail, always, this is my experience of late. Earlier I used to give single medicine, but in acutes I have started giving water dosage. I mix 4 pills in a glass of water, stir it, and try to give it a little more frequently
every time stirring or giving succussion so that it becomes a potency higher to the previous potency, because we have 30 and then we have directly 200. So there are so many potencies in between, and it is my experience, you all can differ, that if you, of late, since a year I have been doing this, and I have felt that the results are more faster and better in acutes, right? There are doctors who give single dose also, and it's completely fine if they have a good experience with that single dose. So as you practice in years, you learn new things, you try to incorporate them in your practices, and you when you see good results, you start feeling, oh, this is a better way to do it, the same way it has happened with me. Okay, now one more thing, I don't ask about thirst or isko thand lag rahi hai kya, but if the parent is classically saying something, I don't neglect it either, right? अगर बच्चे बोल रहे अरे ये तो थर 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 काँप रहा था, 4 कंबल दे दिए और ये तो हिल रहा था, I can take fever shivering with, right? So ऑलवेज ये बात दिमाग में रखिए, और ये बात अच्छे से कि हमारी लॉयल्टी किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ना होके हमारी लॉयल्टी टुवर्ड्स पेशेंट एंड टुवर्ड्स अपैथी होनी चाहिए, राइट? एंड व्हाटएवर इज राइट इज फॉर द पेशेंट, यू वुड डू इट, राइट? Hahnemann himself has talked about physical symptoms, and so many stalwarts have talked about it. Why I'm making this point today, because though 90% of my practice is based on mind method, but if something is very, very peculiar, I take that, and I think there is nothing wrong in doing it. In fact, it will help you to select a better medicine. And in acutes especially, because we are talking about acutes, in acutes especially, give importance to concomitants, give importance to, if it is present, don't ask. Let everything come first. And then whatever gaps there are in your case taking, you can fill those gaps, and always evaluate, देखो कि आप किस सिम्टम को, और इवैल्यूएशन के जो जनरल रूल्स हैं वो वही रहेंगे, क्वालिफाइड मेंटल्स जनरल, फिजिकल जनरल, एंड देन फिजिकल पर्टिकुलर, राइट? सो ये बीमार है, इसको थ्रोट पेन है, फिर भी इसको ठंडा पानी पीना है, फॉस्फोरिक एसिड्स वांट्स दैट, सो गिव इम्पोर्टेंस, फिर भी इसको गर्म पानी नहीं पीना है, ये तो बहुत गर्म पानी मांग रही है, सो व्हाटएवर इट इज, गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल दैट, एंड यू विल सी यू विल have much better results in handling acutes. Okay, second most important point that I'm going to make, diagnose. Don't just keep giving medicine, 6 दिन चले गए, 8 दिन चले गए, आपको पता ही नहीं है बच्चे को क्या हो रहा है. Don't do that. Diagnose. डेंगू तो नहीं है बच्चे में, अगर 6 days के ऊपर हो गया, आपको फीवर हायर दिख रहा है, स्टेप लैडर, टाइफाइड तो नहीं है, कोई हिस्ट्री है क्या? हम इतना माइंड में घूम गए हैं कि हम एक डायग्नोसिस जैसी बेसिक चीज कई बार करना भूल जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन मोर रूल दैट आई हैव इज, आई डोंट allow to prick my patients until unless I feel my line of treatment will change or my expectation will change after the diagnosis, right? तो अगर suppose if I'm suspecting dengue, then only I will prick it. पर अगर मुझे वो viral है या bacterial है, throat infection दिख रहा है, then I will not get my child matlab my patient pricked. Very very few children I ask them to, when I'm really suspecting something grave coming, and जैसे प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो वी हैव टू गिव फ्लूइड्स दैट अमाउंट, और हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल सकता है. दो डायग्नोसिस से हमारा कोई प्रिस्क्रिप्शन पे इफेक्ट नहीं होता, बट हमारी एक्सपेक्टेशन और उसको क्या हम बाकी मेजर्स से करेंगे वो जरूर चेंज होता है. तो आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स वेयर आई हैव एक्चुअली आस्क्ड माई चिल्ड्रन टू गेट देम prick and see what infection they have, या यूरिन रूटीन. तो आप प्लीज उस पर भी ध्यान दीजिए, right? This is also very very important. Diagnosis, analysis, evaluation, how to repeat it, when to think that this medicine is not working and it is a time to change. In acutes you cannot wait for 5 days and say, oh, hyoscyamus was not working, let me give Aconite now. No, the basic, suppose one day हो गया, but कल खा नहीं रहा था, आज खा रहा है, फीवर आज भी 99 आया है पर आज उठ के बैठा है, वेट,
बट अगर कोई भी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट किसी भी लेवल पे नहीं है, स्पेशली एट द लेवल ऑफ माइंड एंड फिजिकल जनरल्स, आई थिंक योर रेमेडी इज रॉन्ग एंड इट्स द टाइम टू चेंज द मेडिसिन, राइट? सो इट कैन बी आफ्टर 4 hours depending upon the condition of the patient. If the child is ekdam and topper, so you can always ask, call me after 2 hours or call me after an hour. Or if the child is in okay state और 12 घंटे में फीवर आ रहा है, you can say कि भाई आप मुझे कल शाम को फोन करिए. तो अक्यूट्स में फॉलो अप भी रखिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, I hope it is clear handling acutes in pediatric cases. One more tip how to handle and know rubrics about acute is मैंने आपको सर्च इंजन कैसे करते हैं वो बताया था रडार में, एंड कंप्लीट डायनेमिक्स में तो देर इज अ टैब विच इज कॉल्ड एज फाइंड, FAIND. You can directly go to the tab, and radar mein you can press shift and question mark together, or you can press FN, which is function, and F4 together. I have made a video also and it is on YouTube, that how to search rubrics in your repertories. So this is a homework for you all. Study all the rubrics related to fever. आप क्या करेंगे आज, आप सर्च इंजन में फीवर डालेंगे, राइट? फीवर एंड एटलीस्ट मेंटल रूब्रिक्स सारे विच इज रिलेटेड टू फीवर. लेट मी सी हाउ मच दे आर. टोटल मेंटल्स एंड फिजिकल 1465 है, एंड ओनली फीवर इन माइंड सिर्फ 220 सिम्टम है. सी इट इज 220 रूब्रिक है. इट इज नॉट वेरी टफ. स्टडी ऑल द रूब्रिक्स एसोसिएटेड विद फीवर. एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग, aphasia fever during, abusive fever during. Just study anguish fever during, right? Study all the rubrics, make notes, and I tell you, your practice would become so much better, and it will help you in handling fever, right? So आज ये बात ही नहीं कर रहा है. अभी फ्यू डेज बैक आई हैड अ चाइल्ड. उसका क्या था, उसकी मम्मी बोली कि ये ना एक ये ना एक ही पोजीशन में रहना चाह रहा है. मैं ऐसे लेटी हूँ ना तो ऐसे ही इसको लेके मेरा पूरा लेफ्ट साइड स्प्रेन हो गया, इसको ऐसे ऐसे करके, या कोई भी पोजीशन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. तो ऐसे ही चाहता है, जो भी पोजीशन में ये कंफर्टेबल हो जाता है ना, बस चाहता है कि मैं उसी में, फिर मैं थोड़ा भी हिलाऊं या खुद भी सीधा हूं ना तो ये रोने लग जाता है. सो देयर वाज अ रूब्रिक. एनीबडी हु नोज? एनीबडी हु वांट्स टू टेल द रूब्रिक? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कि कोई भी पोजीशन में, अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें बच्चे को बेटर लग रहा है, आस्क, take that position, sleeping on abdomen is better, or whatever, hell desire to be upright. या फिर उसने specifically, okay, change aversion to, okay, anything else, very good. इसमें aversion की बात नहीं है ना. ये नहीं कि aversion क्या होता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राइट? यहाँ पे क्या बोल रही है कि ये रोने लग जाता है एक ही कंफर्टेबल पोजीशन में, इसको अच्छा लग रहा है. अगर मैं थोड़ा भी मूव वगैरह करती हूँ तो द चाइल्ड बिकम्स क्रैंकी एंड स्टार्ट क्राइंग, राइट? सो देयर इज अ रूब्रिक इन द माइंड, इनकम्प्लीट रिपर्टरी, वीपिंग, tearful mood, tendency, children in, moved when, fevered in. तो बच्चे को बुखार में, see how beautifully it is given in mind, हेल्थ डिजायर वाला तो चाहेगा कि मुझे गोदी में लेके बैठे रहो, बस आप ऐसे बैठो या ऐसे बैठो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली ये रूब्रिक है. तो जितना, सी आई ऑलवेज से, यू विल ओनली एबल टू सी रूब्रिक्स विच यू नो. तो अगर आपको वो रूब्रिक पता है, ये रूब्रिक, तो ही तो आप अप्लाई कर पाएंगे. वरना तो आप अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं भी नहीं अप्लाई कर पाती. एज सिंपल एज दैट. मैं भी कोई ऐसा रूब्रिक ले रही होती जो क्लोज्ड बाय है. तो हम अपनी प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बेटर पढ़ाई करके ऑफ मटीरिया मेडिका एंड रूब्रिक्स एंड फिजिकल्स व्हाटएवर, राइट? सो वीपिंग, टीयरफुल मूड, टेंडेंसी, चिल्ड्रन इन, मूव्ड व्हेन, फीवर इन. उनको हिलाओ डुलाओ, उनको नहीं अच्छा लग रहा है,
Clear? So the gist is that we have to, आप सर्च इंजन पे डालिए मूव्ड फीवर, आपको मिलेगा वीपिंग, राइट? तो कभी भी आपको रूब्रिक ना समझ में आए, क्योंकि इट इज वेरी वेरी वास्ट एंड इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू आपके दिमाग में कि आप 2,000 रूब्रिक्स याद रखें. इट्स ऑब्वियस कि जो हम 100-200 यूज कर रहे हैं वही हमें याद रहते हैं. But I always do it, if there is something which is peculiar coming in a pediatric or an adult case for that matter, I always search, I always search. आप वो key rubric search करिए, आपको 90% of the time you will be shocked to see कि हमारी repertory में इतना appropriate rubrics लिखे हुए हैं, right? और ना मिले तो जो best understanding उस फीलिंग की आपको आ रही हो, आप वो ले सकते हैं. ओके, सो आई होप यू दिस सेशन वुड हैव गिवन यू सम कॉन्फिडेंस to treat fever or acute abdominal pain in children, and not recite to not go back to antibiotics or steroids and inhalers in the patients and in your children also, which is very important. और फिर भी मैं एक बात बोलूंगी, वी ऑल आर ह्यूमंस. इट्स ओके इफ वंस इन अ वाइल यू फेल विद योर ओन चाइल्ड और विद अ पेशेंट. जस्ट रिमेंबर दैट यू गिव योर बेस्ट. Just remember that, because of late, since the time I have come in teaching, I talk to a lot of homeopathic doctors, take their cases, take their kids' cases. Sometimes I realize कि more than the disease, what is bothering them most is कि I, being a homeopath, has given antibiotic or antipyretic or a painkiller to my child. And they feel so guilty and they blame themselves, they curse themselves, they feel that they are not worthy. And of late I've started, मैंने अभी एक डॉक्टर का केस लिया, उनका तो आप मानेंगे ऐसा वर्जन था कि मेरे को मर जाना ज्यादा पसंद है, rather than, मतलब I felt so bad, I felt really really hurt कि होम्योपैथी हमें स्ट्रेंथ देने की बजाय हमें हमारी इतनी बड़ी वीकनेस बन जाएगी क्या? इट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमंस. अगर आपने एक बार दे दिया या आपका एक पेशेंट फेल हो गया, वी ऑल हैव फेलियर्स. आई एम टेलिंग यू, इवन द बेस्ट ऑफ फिजिशियंस जिन्होंने 50 बुक्स भी लिखी है ना, उनके भी फेलियर्स हैं. सो कई बार ये सेमिनार्स में हुआ जाता है एंड यू आर लुक डाउन अपॉन कि अगर आप एलोपैथी दे दें. I would say if you have not tried, you should tell yourself, let's try, let me do it at least, right? But if you have given your best and still you have failed, you can take a help of a senior or someone whom you trust. Anybody, I'm not saying you come to me, anybody whom you trust, whom you have faith in, and still if you fail and you have to give once in a while something, it's okay. हमारा और एलोपैथी का कोई दुश्मनी नहीं है, हम इंडिया पाकिस्तान नहीं है, right? We are all having the same aim but a different rasta towards it, right? So don't underestimate, don't look down upon anyone, don't look down upon yourself either. Don't be harsh on yourself, otherwise you will fall sick because of that guilt, right? So give your best shot, study hard, and just be nice to yourself. Just become a better learned person than you were before. And please don't look down upon other homeopathic doctors also. Respect them, respect their circumstances, give them that strength. Sometimes in seminars we go, people माइंड, मैंने ये बात अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोली कि माइंड वाले फिजिकल्स वालों का फन बना रहे होते हैं और फिजिकल्स वाले थेरेपेटिक्स वाले माइंड का. इट इज सो बैड. We are fighting among ourselves. In fact, if I am studying from a mind method and tomorrow you tell me ki, I have a very good keynote, I am so open to learn from you. I would be so happy to learn from you. So we should be open-minded. We should learn from each other so that we can bring this pathy and this system of medicine and cure patients in a much, much better way. Are you getting my point? So I have seen this happening because I have, attended both kind of webinars. And please don't feel ashamed
of going to any seminar or webinar, no matter how high you have gone in your life, because you should be always ready to learn, कि भाई शायद मुझे कुछ नया मिलेगा इससे, मैं कुछ और बेहतर सीखूंगी इससे, इस वेबिनार से, राइट? मैं तो जाती हूँ, और मैं लास्ट वेबिनार में जब गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी देम, एंड दे सेड व्हाई आर यू हियर? आई सेड व्हाई आर मीन्स no ma'am, you should not attend. Why I should not? If I want to learn, just because now I have my student, that doesn't make me to stop from learning to someone else. Yeah, right? आप कई बार ऐसा, you should not do that, and you should be proud. In fact, you should tell your students also to do that, learn from everyone. Okay, so this was one point that I really wanted to make. I know I have not been able to make very frequent videos, and you want to learn new remedies, and I promise you, I really, really will try to make more remedies and more, entry points to the different remedies. I'll try my level best. I have 2 announcements to be done. First, we are taking sessions on rubrics, right? So 3 sessions are already done, rubric part 1, 2 and 3. We are studying rubrics, for example, absent-minded children in, and how will you see this absent-minded in your clinical practice in front of you? बच्चा नहीं आके बोलेगा कि मैं तो absent-minded हूँ, right? या तो पेरेंट्स बता सकते हैं, या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो आप ऐसे रूब्रिक्स कैसे पकड़ेंगे? एब्रप्ट, बच्चा नहीं बोलेगा मैं तो एब्रप्ट हूँ, राइट? तो ये चीजें ऑब्जर्वेशन की हैं. तो आप अपने क्लिनिक में कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे उस पर ध्यान दें, कैसे उन रूब्रिक्स को इस्तेमाल करें, और आपको अलग अलग तरीके के रूब्रिक्स का कॉम्बिनेशन में क्या रेमेडीज ज़्यादा आती हैं. ये एक छोटी सी कोशिश है पढ़ने की, बिकॉज आई फील द रूब्रिक इज द बेस इफ यू वांट टू डू प्रैक्टिस थ्रू माइंड मेथड. सो वी आर कंडक्टिंग दिस. 3 सेशंस have already been done. We are doing a 4th session, and 3 session में we have been only covering A ही हमारा हुआ है. अब हम B start करने वाले हैं. So this is our 4th and 5th session, which will be happening in November, right? So this Saturday and next Saturday, 19th and I think 27th of November. So it's a 3 to 5:30, 2.5 hour session. The recording will be available to you for a month. This time I'll give. Right, and if you want previous recordings of 3 sessions, that can be also available to you. So this is one announcement. We'll be continuing this till we cover Z. I don't know how many years it would take or how many sessions, but I'm going to do this, because I feel this is the base. When we attend seminars, we see 3 cases, we learn 4 rubrics, but there is honestly no book which tells you all the rubrics and its explanation. So this is my very small attempt to learn, and teach कि हम एक rubric, कुछ rubrics हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, और उनका मतलब भी कई बार metaphorically भी या normally भी समझना मुश्किल है. So probably today and tomorrow will be, but जितना मुझे समझा है, जितना मैंने अपनी 18 साल की प्रैक्टिस में सीखा है, अप्लाई किया है, रिजल्ट मिले हैं या गलतियां की हैं, I wanted to convey it to you, and I'm not charging for the whole session or the whole A to Z thing, because it becomes expensive. We all are students, so we are charging a minimal 300 for a session, which you all can pay, and you can attend the session. If you are not able to attend, you can see the recording, because that recording will be available with you for a month. Okay, and if you want a previous recording, that can be also done with whatever the charge is, and it's very, very minimal. I don't want to charge 2,000, 5,000 for a seminar, because I know it is difficult when you're struggling with your practice, but I want to charge because I think we give a lot of value to money. If you are seriously in a crisis, I have allowed few students who said that, we are not financially, it's okay. It's okay. You can still attend my session if genuinely, but if it's not genuine, 300, 200 rupees, I don't think it's such a huge amount in today's time, right? So, but I'll again say, अगर आपको genuinely financial issues हैं और आप session attend करना चाहते हैं, you are most welcome to attend the session, okay?
And second announcement, we did a live seminar in Pune this year, and I'm coming to Bhuj now. 18th of December, we'll be having a seminar in Bhuj where I'll be taking pediatric cases and also the approach towards pediatric cases in a broader way. This is a small half an hour session for acutes only, where we'll be also seeing cases. यहाँ पे I cannot show cases because of privacy issues, but वहाँ पे हम cases भी देखेंगे and see how to pick these rubrics. So all of those who live in Gujarat and it's easy for them to, easy तो क्या, थोड़ा तो effort सबको करना पड़ता है. अगर आप आ सकते हैं, then I'll be more than happy to have you in Bhuj. They can contact me. I'll give you the number of the doctor who is organizing a session over there. So 18th of December, which is a Sunday, I'll be in Bhuj taking a seminar on pediatrics, which I'm very, very excited about. So this is all for Gujarat doctors who can make it to Bhuj. Please do come. And when you attend live, it's a different thing. You also get motivated seeing so many students studying hard. You want to work hard, and students also, they get that positive energy to, study and give better results in their practice also. Right, so these were two announcements. Those who want to attend rubric session can contact me for the rubric session 4th and 5th, which will be having this Saturday and next Saturday, which is 19th of November and 27th, I think. Okay, and one more thing that I have to say, as you all know, first of all, I want to wish you a very, very happy Children's Day. We started Pediatrics on 14th of November, and I thought this is the best day, to go live and be with you all, take your questions. If you have any queries, please start writing in the chat box so I can, after all these announcements, I can take your queries. One more point that I have to make. Recently, so many female doctors come to me and tell ki, I've started my practice because I saw you, or you said that if I can do it, you can do it too. You motivate me, and it really, really means a lot to me, I always feel that career is not a choice, career is a necessity. आपको करना ही चाहिए और आप कर पाओगे, ये तो मुझे एक जनरल लेवल पे लगता है, क्योंकि आई सी सो मेनी फीमेल्स. अभी रिसेंटली आई टुक अ लेडी हु हैज क्लियर्ड MPSC and she cried so much, because of kids I left it and I feel worthless, and it somewhere comes back in most of the females. I have seen that feeling of not doing, right? But if I talk only of homeopathic doctors over here, so the next step difficulty that I am seeing in female homeopathic doctors especially is that अभी recently मैंने एक डॉक्टर से बात की. She called me up and she said, I'm really feeling frustrated. I have started my clinic, after getting motivated and felt that I can also do it, but it is really tough. The rent is so much, and कई बार 6 दिन तक patient नहीं आते हैं, या I give a medicine and पेशेंट टर्न अप ही नहीं होता है. तो पहली बात तो मैं बताती हूँ कि ऐसा होता है. इट इज नॉर्मल टू हैव दिस. इट्स नॉट, आपने शुरू तो कर लिया है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपने ले ही लिया है. नाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ परसिवरेंस. नाउ आई नो इट इज टफ. आई हैव गॉन थ्रू इट and I have gone through a long, it took me a long for that success, to earn a substantial amount of money, which I can say, oh, I earn 5,000, 6,000, so nobody considers it that money also now. So I know it is tough, but believe me, if you study and you keep pursuing, you will be able to do it, and you will be able to do it very good. The only way is to study hard, give result. कौन सा patient लौटेगा या नहीं लौटेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है. कई बार patient को अच्छा result होता है और तो भी वो गायब हो जाता है. I'll share last 3 months के cases. I just, मैंने निकाले और I realized that 35 patients have not turned up. I have given medicine to them. I was wondering, oh my God, so much of failures I have. And normally I don't do this, but this time I did. I called up all the patients, and believe me, 30 patients were better. And 2 I was not able to reach, and 3 said, oh, we were not better. I said, okay, you come back to me. I'll study again your case and I'll, give you a different remedy. So that is the only best way I think I can tell you, कि ऐसा कर सकते हैं.
And before ending this live session, my solace is in all these motivating poems that I always read and learn. So I want to dedicate this poem to all the female homeopathic doctors or male homeopathic doctors who have started a clinic fresh and new and feel disheartened and feel कि यार कब वो 1 लाख कमाएंगे या कब वो 50,000 कमाएंगे कि वो भी webinars ले सकें. And I believe me, you are free bird. आप भी 10 लोगों को सिखाइए, उनसे सीखिए और प्रोपोगेट करिए. यू कैन ऑल्सो अर्न मनी. आप भी ये सब अप्लाई करके अपने क्लिनिक में रिजल्ट दीजिए. तो जो भी डिसहार्टन हो रहे हैं उनके लिए मेरी ये पोयम उनको डेडिकेटेड है. मेरी नहीं है, इट इज हरिवंश राय बच्चन साहब की ये पोयम है. एंड उसकी ये 4 लाइनें मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये बहुत बोलती थी अपने मन में जब मुझे बहुत डिसहार्टनिंग लगता था. असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या गलत है, क्या गलत हो गया, देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम. जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम. संघर्ष का ये मैदान ऐसे छोड़ के ना भागो तुम. ऐसे ही जग में किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो आई कैन नॉट टेल यू कि आपको 4 महीने लगेंगे कि 1 साल लगेंगे कि 6 साल, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू एंड विद ऑल द कन्विक्शन कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. तो अगर आप कोशिश करेंगे, एंड आई रियली प्रे फॉर योर सक्सेस कि आप हमसे भी ज़्यादा सक्सेस हों, आप और सेशंस दें और बड़े लेवल पे पहुंचे, आप उतनी मेहनत कर पाएं और एक सक्सेस पे आ पाएं. तो द ओनली वे टू सक्सेस इज नॉट गिव अप. तो आप अपना क्लिनिक नहीं बंद करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ओ मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरा पेशेंट वापस नहीं आता है, इसके पास तो 50 पेशेंट आते हैं, मेरे पास 2 ही आते हैं. इट्स ओके, कल आपके पास 100 आएंगे. मेरे से बहुत 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 सक्सेसफुल होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनके पास बहुत ओपीडी है, मेरी उतनी नहीं होगी. बट I'm not a person who compares and feel disheartened. I am a person who always feel motivated and who's always happy with anyone's success. एक और शायद मैंने बहुत दिनों बाद लाइफ लिया इसलिए मेरे को इतने सारे पॉइंट लेने हैं कि कभी भी ये मत सोचिए कि you are the one, I have reached this, I am Dr. Ruchi, I am the one, मैं ही सबको सिखा रही हूँ, मेरा ही ग्रुप सबसे अच्छा है. नहीं, you are just a small part in this whole ocean. I am just a drop in this ocean. There are so many great doctors who are trying their best, who has done so much for homeopathy. It is just our small attempt, right? तो हमेशा वो modesty रखिए. पर अगर आपको कोई नीचा दिखाए, आपको अंडरएस्टिमेट करे, आपको criticize करे for something which you have not done, please don't take it also. And for those people, I have a small one line. अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सब कुछ हमने ही संभाल रखा है. तो आप अहम में कभी नहीं आएंगे और ना खुद को आने देंगे, ना अपने आसपास वाले लोगों को जो आपके क्लोज हैं आने देंगे. हमेशा हमें वर्क हार्ड करना है, अपने पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट देना है एंड अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनसे सीखना है और सिखाना है, राइट? सो थैंक यू. Wish you all a very happy Children's Day. Those who want to attend the session, do contact me. Those who cannot, it's absolutely fine. Those who can join the Gujarat seminar, please join it. I'll be happy to have you all. And if you cannot, it's okay. I understand. Okay, so thank you. I hope this live session will help you and you would give a wonderful result in your pediatric cases. Thank you.